Much awaited clash in all of Super 8 games. It's India taking on Australia. Can India have some kangaroo curry tonight? That is the bigger question. Hello and welcome. You're watching The Narrative, a T20 World Cup special brought to you by Times of India. I'm Suhaas Vedhaam, joined by Mr. Saba Karim. Thank you for joining us on the epilogue, our pre-match. Always a pleasure, Suhaas. India versus Australia, it's something that you've been rubbing your hands for. You always wanted to see India come out there with a lot of intensity. News coming in, Australia won the toss and they've decided to field first. I find it very strange because you know what, at St. Lucia there are two kinds of surfaces. There's one wicket that has produced a lot of runs. West Indies scored 218, England chased down West Indies 180 very easily. The last game, South Africa versus England, unable to chase 164, and that was the slower side of the entire area. So I think there are 2-3 kinds of wickets there. Okay. So I don't know which game is being on which wicket today's game is to be played. But if it is on a surface which is on the slower side, then for India it may not be a bad idea to bat first, which they will eventually do now since Australia have opted to chase on this track. India continuing their winning streak. Do you see them making any changes in terms of the approach to the game? No, not at all. Okay. I think what I like about India's template this season or this tournament is that India has always looked to score runs and looked to score runs at a very brisk pace. So be it the top order or the combination or the batting order, all these things have been made in a way so that you align yourself to score quickly. And I think that is what has helped India in this tournament so far. And I really hope that they don't get swayed by some other reason and go on a different path altogether. Australia, they made one change. Mitchell Starc comes in. You expected this before a big game? Oh yes, Mitch Starc is a big match player. He's a match winner for Australia. So I was expecting that Mitchell Starc will come in place of Ashton Agar, which means that they will have one regular spinner, Adam Zampa. Glenn Maxwell, I'm sure he will bowl because Australia is up against number of left-handers in the Indian side. So that's the kind of combination they're looking at. We have seen that in the past. Mitch Starc in a big game against top quality sides, he will always get wickets for you. And I think Australia are backing Mitch Starc to get them some early wickets through which they can make some inroads in the strong Indian batting lineup. And that swinging Yorker, sometimes as a batter you know that it's coming, but still that toe comes in the way before the bat comes up. हाँ, so मुझे ये भी लगता है ना कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए इंडिया के टॉप ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए वो है, और ऐसे पेस बॉलर्स जो बॉल को काफी लेट स्विंग कराते हैं उनके सामने आवर टॉप ऑर्डर हैज स्ट्रगल वेदर इट इज रोहित शर्मा or Virat Kohli, and I think that is why they brought in Mitch Starc, because he has that unique or the rare ability to get the ball in very late. So when the ball comes in late, then however much you try and shape up and get ready for that ball, it kind of deceives you because of the late movement. And I think that's what Mitch Starc is capable of. And I think that's where Indian top order batters, especially Virat and Rohit Sharma, they need to be very wary of. St. Lucia में बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान हो जाती है. This is the news that we usually have. Expecting the Indian top order to come back into form? या जैसे कि मैंने कहा था सुहेश का निर्भर करता है कि विकेट किस तरह का है. अगर विकेट ऑन द स्लोअर साइड है तब वो कठिन रहेगा, पर अगर विकेट उस तरह का है जहां पे वेस्ट इंडीज ने 200 से ऊपर रन बनाए थे और इंग्लैंड ने वो आसानी से चेस कर दिया था 180 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तब मुझे लगता है कि और ज़्यादा निर्भय होकर इंडिया को बैटिंग करने की ज़रूरत है. देन यू लुकिंग एट मे बी 40, 45, 50 for the loss of one wicket so that you can continue from there and get to a score about 190, 200 on a track like this. All right. Let's go to squads up firstly and see what the expert has to say about both the squads. We'll start with India. India unchanged. As expected, or you wanted to see something else? No, not at all. I think India has had enough break. I don't think any member of the side, any member of the playing 11 wants to take a break at this stage. We have talked about this, maybe Bumrah, but I think why would you give Bumrah a break at this stage? Because India has got this winning campaign going. They are on such a superb streak because of the kind of combination they have played with. And in a T20 game, because the game is so short, at times some of the players do not get enough opportunity, and I think India has prepared well, and that is why they're continuing with this kind of an 11, so that in all these matches we have found 1 or 2 new guys who have come in and have done well. So I think India, that is why, has persisted with this kind of combination. I think it is a luxury to have such quality bowlers, especially in your side. You have 3 spinners,
All three are equally capable of picking wickets in the middle overs. On top of that, you have the pace bowler. Right? All left arm in terms of spin that we have right now. Yeah, but different variations completely. I mean, Kuldeep Yadav is more of an off spinner than a left arm spinner. Yeah, because of the variation. I mean, he brings the ball into the right hander, takes the ball away from the left hander. Plus, he has that mean googly, which is not easy to pick. And I think Australian batters will have some issues. Both Akshar Patel and Jadeja, although skill set are the same, but they bring in variation because of the way they deliver and the kind of deliveries they bowl. Akshar Patel, slightly roundish arm, takes the ball away from the left-hander, is very nippy, adds pace in his variation. Jadeja, not only quick in completing his over, but also very accurate. And I think all these three will be difficult to handle for Australian batters. When you zoom out a little and look at the bigger picture and you see Rashad, Adil Rashid, Rashid Khan, oh that's a mouthful actually, all leg spinners doing really well, are you tempted a little to look towards Yuzi Chahal? No, not really. Not really. No, why? Because all these three, they add more depth to their to India's batting line. I think India has struggled in the past. So आज क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि थोड़ा उनको संभल के बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि उनकी बल्लेबाजी जो है गहराई नहीं है. अब एक बार आपने गहराई ला रही है, आप लेकर आ गए हैं टीम में अक्षर पटेल की वजह से, तो फिर आप उनको बाहर क्यों रखेंगे? रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, both of them are great package because then you can your batters can really play in a free flowing manner which they have done in the past. बल्लेबाजी यहाँ पर लगभग सभी ने कर ली थी. Kuldeep Yadav, of course, hasn't been tested with the bat in hand and really hope that if India has to have a good game, he doesn't walk out with a bat in hand. You're expecting more runs from Jaddu? Yeah, if there is an opportunity. Jadeja is a very capable left-hander. In all three formats, he has shown that. So if there is a need to maybe send somebody up the order who can stabilize instead of trying to play the big shots, we may see Jadeja being pushed up the order. Otherwise, he'll come at normal position. I think the best part about Rohit Sharma's decision making is that he has used all his all-rounders as floaters, be it Hardik Pandya, Akshar Patel or Ravindra Jadeja. And I think that is a great balance to have and a great luxury to have. And I think Rohit as a captain has been able to utilize all these three all-rounders in his squad in a wonderful manner. Even Shivam Dube for that matter, although we have not seen him bowl, maybe 1 or 2 overs he bowled during the league stage, and I don't think we'll see Shivam Dube bowl now. But I'm just saying, I think that is also the responsibility of the captain to utilize all-rounders in a much better manner, which Rohit has done. Virat Kohli, what differently does he need to do? Something different do you believe before the big semi-finals? Because India do have a queue, but it's just that it's a little faint, that queue. They need to ensure that it's written with permanent marker, perhaps. They will get it. They will get it. So I don't think we should worry so much about India's batting or even Virat Kohli. मुझे तो अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने इसके पहले वाले मैच में बल्लेबाजी की थी. मुझे वही इंटेंसिटी चाहिए. आप 30 रन बनाए, 40 रन बनाए, 15 रन बनाए, पर वही इंटेंसिटी के साथ, उसी एग्रेशन के साथ आपको रन बनाना होगा. यहाँ पर ना अब T20 के फॉर्मेट में वो कंसोलिडेशन का समय नहीं है. वो अब चला गया है. वो 10 साल पहले की बात है. अब गेम इतना ज़्यादा बदल गया है कि इवन टफ कंडीशंस में आपको इंटेंट दिखाना होगा. और ये बात मैंने कई बार कही है कि इंटेंट हो सकता है कि मेजरेबल ना हो सकता है कि वो इंटेंजिबल हो, वो टेंजिबल ना हो, पर वो मालूम हो जाता है कि बैटर क्या ट्राई कर रहा है. That is a good enough message to the opposition camp, to the opposition bowlers, that hey man, this batter is here to score runs, not to defend his wicket. And I think that's the kind of approach that India has shown in all the matches. And I don't see India, getting away from this kind of a path. So you want everybody to chip in. एक हाफ सेंचुरी लगी थी, उसके बावजूद 196 तक पहुंच पाई थी भारत. ये टेम्पलेट अक्सर देखने को नहीं मिलता है. यही होना चाहिए हर मैच में. क्योंकि हर बल्लेबाज अगर ये सोचेगा कि मुझे आज 50 बनाना है, मुझे आज 100 बनाना है, तो फिर तो आपकी टीम गई. पारी आपको ये खेलनी है, ये सोच के अंदर जाना है कि मुझे इम्पैक्टफुल पारियां खेलनी है, मुझे वैल्यू ऐड करना है, मैं जितनी गेंदें खेल रहे हैं, तो वही कोशिश होनी चाहिए इंडियन बैटर्स की. आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल दैट टू हैपन बिकॉज इंडिया इन द पास्ट हैज फॉल्टेड. India has always started off on a very good note, be it the 2022 World Cup T20 or even the One Day World Cup at home. India during the league stages has always shown this kind of aggression, this kind of intensity, this kind of brand of cricket. But unfortunately, for which reason, which is very inexplicable, India has at times gotten away from that kind of a template. Hopefully, India should not repeat that kind of a mistake again. Australian 11 की ओर रुख करते हैं. Are you expecting Maxwell to come good against a lot of left-handers that India sport? Yes, I think Maxwell has struck form at the right time for Australia, and they need someone like Maxwell.
I think Australia's woe starts from the top order. Both David Warner and Travis Head slightly edgy at this stage. David Warner obviously playing his last World Cup. Travis Head has always been, kind of a torchbearer in terms of aggression, and I think he has delivered on so many occasions. But on this kind of track, I just get a feeling that the Indian bowlers may be able to figure him out. Okay. The biggest worry is the captain Mitch Marsh's form. He comes in at number 3, hasn't scored any runs at all. Absolutely. So that is why the entire pressure then falls on Glenn Maxwell, Marcus Stoinis to deliver. Right. Matthew Wade, very limited opportunity, hasn't done well. Tim David, supposed to be a big power hitter, right. Not among runs at all. So I think so in Australia's batting मेरे हिसाब से इस वक्त थोड़ी बहुत उनकी मुझे लग रहा है कि फ्रेजाइल नज़र आती है मुझे, और वहीं पर भारत को अटैक करना होगा, एक्सप्लॉइट करना होगा। हमने नंबर 18 की तो बात की थी, अब 19 की भी बात कर लेते हैं। 19 नवंबर, जख्म अभी भी ताज़ा हैं? हाँ, वो ज़ख्म तो ताज़ा रहेंगे, पर अलग अलग फॉर्मेट है। मुझे लगता है कि दोनों टीम वहाँ से अब निकल कर ये मुकाबला खेलने मैदान में उतरेंगी, और भारत को इस वक्त कोशिश यही करनी होगी कि वो ये मैच जीतें और आसानी से सेमीफाइनल्स में वो क्वालिफाई कर जाएं। Okay. और फिर देखते हैं, बात की बात करेंगे। पर इस वक्त ये मैच बहुत ज़रूरी है, एक तो अपनी धांस जमाने के लिए कि हमारी जो टीम है ज़्यादा मुकम्मल है, ज़्यादा दम है इस टीम में, और एक बड़ी टीम को अगर आप हरा लेते हैं तो फिर आपका विश्वास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंक तालिका भी कुछ कहना चाहती है, एंड अंक तालिका में आप देखेंगे भारत सबसे ऊपर, 2 मैचेस दोनों जीत चुके हैं, 4 points, 2.42 that net run rate. That will be very, very helpful. And Australia, firstly, they want this game to happen. भले बारिश के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अब तक तो चीजें क्लियर हैं। यही वहां से न्यूज आता हुआ, they have to win this one to keep themselves alive, so that the fate is in their hands and they don't leave it to Afghanistan again. अफगानिस्तान एक बार बदला ले चुकी है, लेकिन बदले का मजा तब होता है जब आप बार बार लेने की कोशिश करें शायद। सो अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो गेम है, सबा सर, वो चाहेंगे अफगानिस्तान की, बांग्लादेश को हम बीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे स्पिनर्स फॉर्म में हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी ये बात जानती है। हाँ, वो भी बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है। पर अफगानिस्तान ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, पिछले मुकाबले में हम लोग ये बात कर रहे थे सुहास कि अगर अफगानिस्तान किसी भी बड़ी टीम को हराएगा तो वो अपसेट नहीं होगा, कि वो अपसेट नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने कई बार बड़े बड़े मैचेस में तंग किया है, टीमों को हराया भी है, और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर उनको एक तरह से महारत हासिल है, उनको पता है कौन कौन ऐसे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले मैच में हम लोगों ने यही देखा। तो ये बांग्लादेश के खिलाफ मुझे लगता है कि फेवरेट तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान की टीम ही है। अफगानिस्तान की भी है। ऑलराइट, विजय सर, वेलकम टू द शो। Thank you. As expected, I think it's the laundry person, right? He mixed up the yellow shirt with something else. No, it was you. It was your pressure. You said come in yellow. So Yes, I did. I was looking for yellow. बात कर रहे थे कि फाइन लगनी चाहिए, पेनल्टी लगना चाहिए, सब भूल गए। नहीं, वो 3 बार में होता है ना, वो तो 3 बार पहली बार में यहाँ रूल अलग है, का फर्क है, यहाँ अलग है। अच्छा, यहाँ के रूल अलग है। पहले बता दो कितना है इन डॉलर्स। आंखों में देख के बात करो। और चलो जल्दी से मैच के बारे में बात करते हैं। कहाँ पहुंचे हुए हम, ऑस्ट्रेलिया या अभी भी अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं फाइन कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ आपको। बट अभी तो फिलहाल स्क्वाड सब खत्म हुआ है, और स्क्वाड सब में मैं आपसे लेकिन एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि हमने बात की थी कि मैक्सवेल लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी वैसे भी कराते हैं, और भारत बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स को सपोर्ट करता है इस 11 में। क्या भारत के जहन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि मैक्सवेल को थोड़े ध्यान से खेलें, या फिर वो उसी इंटेंसिटी के साथ खेलेंगे जैसे कोई और बॉलर हो? मुझे लगता है कि पहले मैक्सवेल के बारे में बात करते हैं। मैक्सवेल एक इस तरीके का खिलाड़ी है कि जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग नज़र आता है, और इस समय जो पारी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली है, या जो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा दिखाई है उनके लिए, वो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से तवज्जो देखने की कोशिश करेंगे वो मैक्सवेल को। मैक्सवेल कुछ इस तरीके के ऑफ स्पिनर नहीं है कि आपको ये लगे कि हमें कुछ अतिरिक्त तरीके से इनको खेलना है। मैक्सवेल है, वो सूर्य नारायण नहीं है। लेकिन इस फॉर्मेट में कोई भी कुछ भी कर सकता है, आप किसी को लाइटली नहीं ले सकते हैं। और ये एक रणनीति ज़रूर रहेगी कि जो इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं भारतीय टीम में, वहाँ पे आप कुछ ओवर मैक्सवेल के करा सके। अगर 4 नहीं तो कुछ ना कुछ ओवर आप ज़रूर उनके जल्दी से कराने की कोशिश करेंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर जैम्पा और उनके दोनों के ओवर मिला के आप 5 ओवर या 6 ओवर कराने की कोशिश करें, अगर 8 नहीं तो वो रणनीति ज़रूर रहेगी। पर हाँ, जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि 2 लेफ्ट हैंडर अगर मध्य में है तो वो एक विकल्प ज़रूर मिच मार्श के पास रहेगा कि वो मैक्सवेल का इस्तेमाल कर सके।
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम सबा सर जो हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करते हुए नजर आती है, लेकिन इस मैच के आने से पहले जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। अगर फील्डिंग में देखा जाए तो कैचिंग फील्डिंग में ये तो बहुत कम बार हम लोगों ने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग और कैचिंग इस तरह की हुई होगी जो पिछले मैच में अफगानिस्तान में नजर आई थी। कैचेस उन्होंने छोड़े, रन्स कंसीड किए, वो जो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस हमेशा नजर आता है। उनकी फील्डिंग हमेशा से बहुत ही टॉप क्वालिटी की रहती है। वहाँ पे अगर गिरावट आ गई है किसी मैच में तो इसका मतलब है कि इसी वजह से वो मैच हारे अंत में। वो इम्पोर्टेंट रन्स थे जो उन्होंने कंसीड कर दिए। पर मेहनत तो ज़रूर करते हैं, उनको मालूम है कि इस मैच में उनको वापस आना है, खास करके इंडिया के खिलाफ। तो उनकी फील्डिंग और अच्छी होनी होगी, नहीं तो फिर वो बहुत दूर हो जाएंगे इस मैच में। पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स ना इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब एडन मार्करम ने क्या किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उन्होंने आके बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली, 1-2 विकेट ले लिया, बड़े बड़े हिटर्स को आउट कर दिया। क्योंकि वो जो मैचअप होता है ना, वो पार्ट टाइम के सामने बैटर को ये लगता है कि नहीं आज इस ओवर को ना बड़ा कर लेते हैं, और उस चक्कर में वो आउट हो जाता है। तो ग्लेन मैक्सवेल के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए उनका बॉलिंग तो जरूर करेंगे और मुझे लगता है कि एग्रेशन ही दिखाना होगा इंडियन बैटर्स को। The other thing is when we say Maxwell is not new to any sort of a role. He can bowl a couple of overs in first 6 as well. But keep in mind in this World Cup, this ground, the run rate is the best. This is the highest scoring ground. So you have to keep that in mind as well. The economy for spin at St. Lucia versus pace, which is 9.42. Economy slightly higher. Just underlining your point. I'm just saying that if you look at the average score on this ground, is the highest on this particular ground. So Maxwell will be under pressure in that sense. But what goes in his favor is that he's not somebody who will be thinking that as a main bowler. He'll be thinking, okay, if I can just chip in with over or two, I think I've done my work, I've done my job. This is what Maxwell will be thinking. And on the other end, I think Indian batters, although like I just said earlier, won't take anyone lightly, but Maxwell is not the one they'll be thinking about. I'm just trying to put my head as to why Australia have decided to bowl first, which means that they are backing their the depth in their batting to chase whatever score India puts on the board. जो मैंने पहले कहा था विजय के आने के पहले कि यहाँ पे जो विकेट्स हैं ना वो दो तरह की हैं। एक सरफेस तो ऐसा है जहाँ पर ढेर सारे रन बने, जहाँ पर 200 से ऊपर वेस्ट इंडीज ने बनाए, जहाँ पर 180 आसानी से इंग्लैंड ने चेस कर लिया, और एक ऐसा विकेट है जहाँ पर पिछला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पे इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया था 164 चेस करने में। वो ऑन दैट सरफेस ऑन द स्लोअर साइड। पर ये ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस विकेट पे बैक कर रहा है अपने बैटर्स को कि वो चेस कर सकते हैं। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा भारत के लिए कि जो एग्रेशन, जो इंटेंसिटी भारत ने दिखाई अभी तक अपने बल्लेबाजी में, वो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमें नज़र आया, क्योंकि वही तो मुकाबला है, यही तो बहुत बड़ा मैचअप। कितने सारे हैं, मिच स्टार्क वर्सेस विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबसे बड़ा मैचअप तो नई बॉल के साथ ही हमें नज़र आएगा। आई थिंक उसके अलावा भी मैचअप में अगर आप नज़र डालें ना, 2 captains, one is a new captain as far as this format is concerned, under pressure. If you look at their numbers, although Rohit got a 50 to his name as well, but Mitch Marsh is struggling big time. Now 18 is his highest. Is his highest. I mean, like if you look at all the captains, his numbers as far as other captains are concerned in this World Cup is the lowest. So he'll be thinking on that aspect as well. Apart from that, matchups you said, I think everybody was waiting for this encounter, and this encounter has become more interesting after Afghanistan winning against Australia. So there is added pressure on Australia. If India lose or there is a 1-point share, India is still okay. I mean, like they're still in the business. But if Australia loses today, nobody was expecting them to be out of the tournament, and they'll be out of the tournament if they lose today. Right? Are you expecting Australians to bring in spin in the power play? Perhaps Maxwell or somebody else? They can do that. I mean, they have several options. They have so many. They have all-rounder in Marcus Stoinis, top quality pace bowling attack, Josh Hazlewood, Mitch Stark. Then you have Adam Zampa. So they have enough bowlers. It all depends on India's approach in the power play. If Mitch Stark can pick up early wicket, they may not need it. If India can get off to a good start, then we may see that change. And let's not forget about double hat-trick man in the side. Pat Cummins is there. I think Pat Cummins के बारे में वो है कि I think India needs to be aware of that. His skill set are so different from the other two bowlers in the Australian bowling lineup. He always prefers pace off, hit the deck, and the cutters. And I think whether it is a placid wicket or a wicket that grips, that's his line of attack. And I think generally he bowls in the middle overs with that kind of a mindset. I think it's not easy
to get away with. The other thing which goes in their favor, bit in their favor, is the height of their bowlers. So they're able to generate more bounce. It doesn't matter what sort of a surface they're playing on. They still take a little bit of a extra bounce on those kind of any kind of pitches. अच्छा हुआ कैम ग्रीन नहीं खेल रहे हैं. अच्छा हुआ क्योंकि he is vertically blessed that way. Exactly. He bowls to the first floor. हेजलवुड की बात करो, स्टार्क की बात करो, कमिंस की बात करो, स्टॉइनिस की बात करो, सबके पास हाइट के एडवांटेज तो है ही. ट्रेविस के सिवाय भी हेड टू हेड की बात कर लेते हैं. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 31 गेम्स, 19 विन्स फॉर इंडिया, 11 लर्निंग कर्व्स फॉर इंडिया एंड नो रिजल्ट एक बार हो चुका है. सी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको दर्शाता है कि दोनों टीमें किस तरीके की हैं, किस तरीके की क्रिकेट ये खेलती हैं, बट दीज नंबर्स आर डेफिनेटली मोर इन फेवर ऑफ इंडिया एंड दैट सजेस्ट दैट हाउ beautifully or how quickly we adapted to this format. Right. And the other thing is what Australian is thinking, Saba bhai, मुझे लगता है because normally जब आप T20 क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और अच्छी पिच के ऊपर खेलते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि चेस करना पसंद करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने विकेट को रीड किया है, जिसकी तारीफ रही थी वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था कि ऑस्ट्रेलियंस ने कितना बढ़िया तरीके से पिचेस को रीड किया था, यहाँ पे शायद दे आर थिंकिंग दैट दिस इज अ विकेट व्हिच इज गोना स्टे ट्रू एंड आई थिंक पुट प्रेशर ऑन इंडिया बाय थिंकिंग दैट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अ वेरी solid and a long batting unit. Right. How much is enough on this particular game? ये जो stats है ना, वो कई बार जो सही पिक्चर है ना, वो रिवील करते नहीं है. और भारत के लिए ये स्टैट्स का कोई अर्थ नहीं अगर हम वर्ल्ड कप में ये सारे मैचेस ना जीते हैं. अंत में भारत की परेशानी क्या रही है? इतने साल हो गए हैं. पिछली बार हम लोग विश्व कप जीते थे 2013 में, चैंपियंस ट्रॉफी, है ना. उसके बाद हम लोगों ने कोई भी आईसीसी इवेंट जीता नहीं. तीनों फॉर्मेट में करीब जरूर आए हैं पर हम जीत नहीं पाए हैं जी. तो भारत को अब ये सोचना होगा कि ये सारी चीजें हम लोग बात करते रहते हैं, इससे कोई मायने नहीं है अगर हम विश्व कप में आईसीसी इवेंट्स हम लोग ना जीतें. और ये बहुत ही अच्छा मौका है भारत के लिए. यहाँ पे अगर उल्टा भी रिजल्ट होता ना ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तब भी मुझे मंजूर है अगर हम आने वाले मैचेस यहाँ से जीत ले तो. क्योंकि इस तरह के स्टैट्स का कोई अर्थ नहीं है अगर हमारे बीसीसीआई के जो कैबिनेट में ना और एक और ट्रॉफी की जगह एक और नहीं लगातार आनी चाहिए. तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जितना एक्सपोजर, जितनी ताकत हमारे टीम में है, जिस प्रकार के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपोजर दिए जाते हैं, हमें और भी कई सारे वर्ल्ड कप इवेंट जीतने थे तीनों फॉर्मेट में, जो हम लोगों ने किया नहीं है. पर ये अवसर ज़रूर है. इंडिया का अप्रोच सही है और यही प्लेटफॉर्म है, ये विश्व कप है जो भारत को जीतना चाहिए. Right. Being on your side because you were just displaying these numbers. You don't display these numbers in the dressing room or anything like that. But whenever you have a bit of a chat, you always smartly put in these numbers by saying this, that head to head we have done better than these guys. Who does this? The captain does this, the coach does this, I don't the think so. statistician does it? Captain doesn't come in with these kind of numbers. Captain will say that we have done well. But when it comes to exact numbers, I don't think so. You have to tell exact numbers that we have met 31 times, we are winning 19 times. Or you don't talk like that. But there are other things you talk about. You talk about individual performances, and you have two big, giant-sized players in your side. Virat Kohli, his numbers as far as his batting is concerned, he's the highest scorer in T20 cricket against Australia. And then you have Bumrah, our number one bowler. He's got the highest wickets against Australia. You mentioned that. That these are the guys. Bumrah has been among the wickets in this tournament, and I think come these kind of matches, you look at your top player, and Virat Kohli is no doubt your top player, and he'll be looking for that challenge. As well. Yeah. So I'll tell you what, the numbers are revealing a story. We'll talk about that and a little more on stories on the side. Numbers wise, India way ahead, but again, the giant in Virat Kohli needs to step up today. There isn't a better opportunity. We've been saying that a couple of times now, but there isn't one before India could enter the semi-final. And you know why we're saying this? Because he's done that in the past. He's been there, done that, and that's the reason why the expectations are there. And that's the reason why when you talk about these kind of players, you say, all right, the challenge needs to be a little bit more to perform more or perform better. And I think you can't get anything better than Australia in a game. Although it's a must win for Australia, but still, I think Virat will be gearing up for this one. Very quickly, you said emotionless cricket is what Australia play. Would that help them today, coming back from a loss? I think they are a smart side. They've gone through such upheavals many times before in ICC events. So they have the strength and the character to recover. I think India is aware of that. Getting back to Virat Kohli, just one word, time for him to make his own music. All right. And then the bowlers will march to his drum beats. Let's move on to extra yard very quickly.
Okay, prediction time. We'll start with you now, not Saba this time around, with you. You're happy about this? लेट आने का कुछ तो रहना होना चाहिए. बताइए बताइए. नहीं लेट आने का ये है. देखो भाई, Power play. 50-50. Are you talking? You want to start with power play? Power play. India is batting now. Yeah. Last time, like I said, anything between 48 to 58. And the wickets column? One down. One down. Okay. What about you? Power play तो बता दिया ना. I'm looking at 180, 190. 180, 190. India would be minded. India gets to that score, I think India will romp home. I think you need that much. To be very honest, you need 180 plus in a game like this. 180 plus. India has been tested while defending totals. India has been tested adequately while setting them as well. This is going to be even more spicier a contest as Australia is trying to make a comeback after the Afghanistan loss. It's India versus Australia. Enjoy the game. You've been watching The Narrative, a T20 World Cup special brought to you by Times of India. That's all we've got for you from the epilogue. Thank you so much, gentlemen, for joining us, and thanks to you as well for doing the same. We'll meet you at the interlude, our mid-match show.